वेलकम टू पाकिस्तान इंसाइडर, दिस इज़ ज़ैन खान। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जुल्करनैन जमील। जुल्करनैन जमील ने एक नया ट्रेंड सेट किया है एजुकेशन का, और वो उसको कहते हैं टेंट स्कूल। आए अब चलते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि टेंट स्कूल की फ़िलासफ़ी क्या है और उसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट और डॉक्ट्रिन क्या है। वेलकम टू आवर शो जुल्करनैन जमील, दिस इज़ ज़ैन खान। I'm really thankful to this forum, Pakistan Insider. जुल्करनैन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों स्टार्ट किया? Yeah, thank you. I started this mission. I mean, मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं कुछ, बिकॉज वी टॉक अबाउट, हम लोग बात करते हैं कि 25 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, एंड आई सी के 20 मिलियन एजुकेटेड बंदे भी हैं, एंड दे आर वॉकिंग अराउंड जॉबलेस. सो I see that there's something wrong with our current education system. We are producing हम लोग जो है ऐसे माइंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कि वो जॉब्स ढूंढते हैं. Interestingly enough, there was a research survey done by me, जिसमें हमने जो था फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से जाके सर्वे किया, व्हाट डू दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, एंड क्या वो बिजनेस करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, या वो जॉब सीख करेंगे. इन द फर्स्ट सेमेस्टर दे वर लाइक विल बी seeking we will be entrepreneurs, and in the last semester their whole mindset changed, that will be like will be uh, seeking jobs. So there is something seriously wrong. Our education system is not creating entrepreneurs, and it's just focusing on the rat race and not on the actual work being done. And we need some inventors. We don't have thinkers in the East from quite a while now. So we need those kind of, we need to rethink education so that we can create Edison, Newton. We don't have हमारे पास ज़्यादा thinkers नहीं है यहाँ पे. We need to create thinkers, philosophers. We don't talk much about philosophy. So we need to. There's a serious gap in that. We need to, shift our focus towards that. We need to encourage individual thinking ताकि हमारे पास आए. Zulkarnain, you left Telenor Pakistan, a corporate giant. Isn't it a daring move? आपके पेरेंट्स ने इसको किस तरह हैंडल किया और आपने पीयर प्रेशर किस तरह हैंडल किया इसके इर्द गिर्द? Yeah, when I was working in Telenor Pakistan, it was, the most famous workplace, and the peer pressure, my colleagues and all discouraged me not to leave this job, and even my parents, they said not to do this thing, that you'll be अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो, and you are doing a thing जो कि possible नहीं है, and uh, personally speaking, I was not satisfied when I was working in Telenor. And मैं सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ. So then I went to the slums and educated those kids, and the satisfaction I feel from that is something different as compared to the work I was doing there. Basically, if you have a passion for something, that drives you. पैशन अगर आपको किसी चीज़ का है, रास्ते में कोई भी चीज़ें आएंगी, you will overcome that. Now this Telenor job, obviously no doubt it's a social status over here, and so quitting it was not an easy decision, but I quitted it, and then uh, I am trying to create my own job, and we have created a few jobs for other people as well. Like, we'll go to certain communities, and as our work flourishes and expands, we'll be offering lots of jobs to local people, and we'll empower them through education. And they say that the highest result of education is tolerance, and we need to be. That's my passion. To make every man more tolerant and listen to the um, डिफरेंट ओपिनियंस, और हम एक दूसरे का एहतराम करें, और इसी में जो है पीस इसी के थ्रू आएगा, थ्रू एजुकेशन. एंड सो this passion thing drove me to do this daring move, and I guess it's not daring because in passion, if you have passion for something, then nothing can stop you. So जुल्करनैन, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में पाकिस्तान में कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन सी खराबियाँ हैं, ज़रा उसको हाईलाइट करें.
from early childhood education, we need to promote one thing, that is collaboration. And in this way, we'll make our childs more tolerant, and they'll work together for the betterment of the society. And through we can achieve results through collaboration only, not by external motivational factors, first prize, second prize, third prize, and stars and prize money. So we need to be collaborative, and this is the only way we will solve the Pakistan's issues. So that's the success, key to success. अच्छा, कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं जुल्करनैन जो पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म कर सके, उनके फ्लॉज दूर कर सके? आई थिंक पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं एजुकेशन के, एंड 25 million kids are out of school and 20 million jobless graduates. So this is something like a huge challenge for us. And मैंने काफ़ी रिसर्च की इसमें, तो आई हैव सीन दैट के if you want to educate kids in the proper infrastructure, the way we think building honi chahiye, and we should have libraries and this kind of stuff and everything in a proper way, so that will cost a lot. So what I think is that we need to bring up new solutions. By the use of technology, we can reduce the cost to 1/10 of the actual cost. एक स्कूल में जो कॉस्ट आती है लर्निंग में एक महीने की, वो तकरीबन 3500 से लेके आप 10,000 तक आपके पास प्राइवेट स्कूल्स हैं. Then again, we don't see that sort of learning outcome which we want. So this is the opportunity as well to change the mind shifts, and I think we need to integrate technology in education, and we are doing that, and there are awesome results of that. Kids are learning way too fast, and in this way we can make people, जो बच्चे हैं वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, और हर बच्चे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन्ड है. It's much more effective. It's more effective, and or this 10 school model, which is not it's a push, it's not a push in model, it's a pull in model. Kids come to school themselves. We have made learning so much fun, so much exciting, that kids want to learn. So I think we need to make our education in such a way that kids come themselves. So Zulkarnain, what is the most important outcome of learning? Okay, so that's really an interesting question for me. अगर हम बात करें तालीम की, तो तालीम हम इसलिए हासिल करते हैं कि एक बेहतर शख्सियत बन सकें, एक माशरे में हम लोग बेहतर किरदार अदा कर सकें. और आजकल जो है वो चेंज हो गया थोड़ा सा शिफ्ट उसका. वी आर मोर अबाउट जॉब्स, जो कि मेरे ख्याल से गलत है. वी शुड नॉट बी कि हम एजुकेशन इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम जो है जॉब ले सकें और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएं, या फलाने इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टरी आ गई, या इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है. आई थिंक द बेसिक पर्पज ऑफ एजुकेशन इज़ टू know yourself and be more tolerant to others, and have a better civic sense. So we as a Pakistanis don't pay so much focus on civic sense and those kind of things which are really important. We see कि अगर स्कूल जो है, हमारे स्कूल जो हैं ये सिखा रहे हो सफाई निस्फ़े ईमान. हाँ, इस्लाम कहता है सफाई निस्फ़े ईमान है, लेकिन अगर हमारे स्कूल्स ये चीज़ सिखा रहे होते कि सफाई निस्फ़े ईमान है, या डिसिप्लिन ये सिखा रहे होते, हमारे पाकिस्तान की सड़कें बिल्कुल साफ नज़र आ रही होती. सो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन दिस. वी नीड टू बी दिस इज़ द थिंग वी नीड टू फोकस ऑन, कि हम सिविक सेंस ज़्यादा दें, और टू मेक पीपल थिंक कि वो जो काम कर रहे हैं क्यों. इफ फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इफ दे आर वोटिंग फॉर एनीवन, दे शुड नो उनको पता होना चाहिए वो वोट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, और जिसको वो वोट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम टू नो दिस. सो दिस क्रिटिकल थिंकिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. We say that the nation with most modern knowledge rules the world, and we need to make some reforms in the field of education. Will that be easy for us Pakistanis?
जी बिल्कुल, आप अगर देखें पुराने ज़मानों से एंशिएंट ग्रीक्स ग्रीक्स से लेके आप मुस्लिम एरा आया, बैतुल हिकमा, देन दिस द वेस्टर्न एजुकेशन एंड द न्यू जिसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरल एंड द साइंटिफिक एवोल्यूशन जो हुई है पिछले 200 साल में, तो वी कैन सी दैट कि जो भी मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न स्किल सेट के साथ होते हैं दे रूल द वर्ल्ड. So what we can do is we can I mean हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाएं कि हम मोर टॉलरेंट हों, मोर I mean innovative and more creative so that we can solve the problems we are facing right now. We are a nation. I mean हम जो थोड़े से third world country हैं, obviously we need to move forward towards the तरक्की याफ्ता मुल्क, and for that we need the modern knowledge and we need to acquire all the skill sets, need to be a तरक्की याफ्ता मुल्क, एंड उससे ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ें, और उसके लिए इंडिविजुअल थिंकिंग, इंडिविजुअल एम्बिशंस, एंड हर बंदे की जो पैशन है वो उसमें काम करेगा, और एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को अलाउ करे कि हर बंदे का जो पैशन है उसमें वो काम करे, बजाय इसके कि हम स्नब करें, नो 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 ये नहीं होगा वो नहीं होगा. Let them do themselves. Let them be. Let's say that the teacher acts as a facilitator, and the student's desire to do something uh, will play an important role. So in this way, I think we can move on towards the तरक्की याफ्ता ममालिक. Your plan of education system is challenging the status quo. How are you dealing with the social pressures, Zulkarnain? जी बिल्कुल, अगर आप बात करते हैं एक भेड़ चाल चल रही है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, मैं तो कहूँगा यही चल रहा है कि यू हैव टू बी, आपने क्लास में जाना है, एंड देन यू हैव टू डू मैट्रिक एंड देन एफएससी एंड देन डिग्री, एंड इनोवेशन की बीच में से बात ही निकल गई है. हम लोग बात कर रहे हैं इनोवेशन की. इनोवेशन इज द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम, एंड वी नो दैट वी नीड टू शिफ्ट और माइंडसेट. अगर होता तो जो हमारे पास 20 मिलियन जॉबलेस जो फ्रस्ट्रेशन पड़ी हुई है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम जो है बेरोजगारी पे काबू पा लेंगे. बेरोजगारी है क्यों? Why can't or people do something on their own? What's wrong with the current education system? People can't do something on their own. So they have to accept this, that there is something seriously wrong with our education system, and we need to remove that. And in order to remove that, we need to shift our mindset towards that. कि ऐसे नहीं होगा कि आप जो है उसी सिस्टम से आए और फिर देन यू एक्सपेक्ट डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट. I guess this education system is unrepairable. It's beyond repairable. We need some shifts in the early childhood education, and in the higher secondary education as well. हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो डॉक्टरी की फील्ड में चले जाते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है यार ये तो हमारी फील्ड ही नहीं थी. Why can't we allow them to discover something before that? I mean, when they are 7, 8 years old, 10 years old, if they commit a mistake at that time, a career mistake, then they can obviously do that. I mean, ना वो सही कर सकते हैं उसको. So ये तो है, social pressure तो है, I guess, but people know that there is something wrong, and they will accept it. Some of them are accepting this who think, and those who don't think will get it. I mean, in the next few years or so, when we'll show that the 10 schools progress and how kids are innovative and the inventions being done in Pakistan. I'm really hopeful that this will, innovation and entrepreneurship is the way forward for Pakistan. आपने जब इस मिशन को टेकअप किया तो सबसे बड़ा हर्डल आपके रास्ते में किस चीज़ का था? This is the most important question. I mean, the biggest hurdle, as I've already told, that the peer pressure and the social pressure. And मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे एकेडेमिया जो है पाकिस्तान में, एकेडमिक्स उनसे भी है कि दे डोंट एनकरेज दिस, कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है या कोई कुछ करना चाह रहा है, दे डोंट सपोर्ट इट. For example, if I talk about myself, I'm a student of innovation technologies and education, and
I mean, I left my job and everything. I asked them for the incubation and they denied me uh, कि इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है तो ये होगा तो फिर ये होगा। आई मीन इतने टाइम में जो है इतने रूल्स आपने बनाए हुए हैं कि एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी, फिर जो है होगा। सो दैट किल्स द इनोवेशन एंड दैट इज सेम लाइक दैट के मरीज जो है आपका आया हुआ है एंड यू नीड टू फिल द फॉर्म फर्स्ट एंड देन जो है इलाज होगा उतनी देर में चाहे मरीज मर जाए। तो पाकिस्तान में एकेडेमिया जो है उस तरह सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स कि उनको उनको जो है फैसिलिटेट किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो करता है कुछ चीज़ अचीव करता है तो देन जैसे यार ये हमारा स्टूडेंट था, इसने देखो क्या कर दिया। एंड अगर कोई पोपा कोई कुछ जो है अचीव नहीं करते तो देन जैसे यार ये पहले से ही ऐसा खराब था या जो भी था। तो एक प्रोजेक्ट जो सक्सेस होने लगता है उसमें एकेडेमिया जंप इन करने की कोशिश करती है कि हम जो है वो अब बाद में इसको क्लेम कर सकें कि हमारा था। एंड आई थिंक इस किस्म की चीज़ें एकेडेमिया में नहीं होनी चाहिए। एकेडेमिया इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई माई सेल्फ आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ ड्रॉप आउट फ्रॉम my university. I won't take the name of the university where I was studying, but I'm a graduate from Fast University and I'm proud of it. I mean, that university allows somewhat, I mean, flexibility. Thank you so much, Zulkarnain Jameel, for being in our show. I appreciate it. And I'm really thankful to the team of the Pakistan Insider, especially Zain Khan, and I'm proud of you guys what you are doing. ये थे जुल्करनैन जमील, द मैन बिहाइंड द आइडिया ऑफ द टेंट स्कूल। अगले एपिसोड पाकिस्तान इनसाइडर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ ज़ैन खान। टेक केयर एंड गुड बाय।